I've seen students, what they do is they remember all formulas of chapter. And after that, like 20, 30 chapters down the line, they mess up all formulas. And they then put numericals and they get haywire results. ऑफिस के बाद मेरा कोई फ्रेंड सर्कल मैंने नहीं उस समय मेंटेन किया. So hello everyone. In my career focused on meeting medical aspirants, I have found one factor which stands out in most top rankers: a careful selection of formative educators and a balanced parental support. Our today's guests are a father-son duo who work together as a team to achieve this dream. Let's welcome Aaditya Vasudeva and his father, Mr. Jainendra Aggarwal. Hi, Aaditya. Hello, ma'am. There were some techniques you were following which were helping you to learn the concept more easily than others. Yes. Were there any such secret techniques? Now you can come out with it. No, ma'am, there's no just secrets. It's just about your love for that subject. You must truly understand, you must truly be joyful in understanding everything that your teacher tells you. So that is important. And it's like when you are stressed, you cannot get in things clearly inside you. So that is it. There's no quote unquote secret. But you have always been an amazing student, right? Whether it was being regular in class or not missing out any class, and even your techniques of attempting question papers. And I remember that you had this technique that you used to, while reading the question paper, you used to underline the questions and you used to tell me that I follow this technique so that I don't miss out on the words like correct and incorrect. Yes. Since it's an offline exam of NEET. Yes, yes. So how did that technique help you and how did you develop it? So I develop it in this sense. So when you read a book, you must underline all its important points. Now by underlining, I don't say that highlight all the book, so you don't even know what's important and what's not important, but underline the key points, make a core concept, and that goes the same for the question. Now we have 180 questions and 180 minutes. So each question approximately 1 minute to solve. And there are, I think, 5 to 6 lines in per question. So you underline the basic points, the basic idea of the question. Now, what is the question asked? Statements which are not incorrect. Now, what is two negatives? Yes. So that is important. And in physics also, you may mess up in numericals, right? So you underline each and every point, you understand each and every value, and then put it into the formula and get the answer. So that is. And perhaps it also helps you to concentrate. Because Yes, when your eyes are looking at the question and your fingers are also moving, over that question with the pencil, perhaps it helps you to, grasp it better. You're focused and your attention does not drift away. And, it has been pointed again and again that how you scored very easily 180 out of 180, in physics at that time. And a subject which pre-medical students lag in. I know you had marvelous teachers and you had very good formative years also, your 9th, 10th also, you had very good coaches. So, but I want to know, how can students, get that kind of marks in physics? First of all, I had zeal for physics. I really loved that subject. I enjoyed studying physics. So one of the reasons is that, and I would suggest 2 things. Now, the first is that building a core concept, because that is the foundation stone for physics, right? So like in every chapter, there is this core concept and there are 2, 3 formulas around that core concept. Now, I've seen students, what they do is they remember all formulas of chapter. And after that, like 20, 30 chapters down the line, they mess up all formulas. And they then put numericals and they get haywire results. So that is not required. What is required is one basic foundation, 2, 3 formulas, and then you extrapolate and manipulate from that single formula into the kind of formula that the question asks you for. And the important thing I would say is practice. So obviously we know practice makes a man perfect. How do you manage to cover all the questions in the stipulated time? Because sometimes students have this problem in physics, we were not able to finish the paper in time. Yes, ma'am. So I think out of 3 hours, one should at least keep 1.5 hours for physics. So that is very important. So one should finish up like portions like biology and chemistry earlier,
and one should keep nice amount of time for physics. Now, the thing is that when you practice a huge amount of questions, like per chapter, I would say 300 to 400 questions, it builds a confidence in you, right? And using that speed and confidence, you can like complete whole section of physics in the stipulated time. And some questions are like new, so skipping those questions and doing those questions which you actually know, that helps a lot. Now, not getting stuck on the difficult kind of questions, that is important. Were you spending more time chemistry and biology, or were you giving equal time to all? I remember you were giving a lot of time to biology also, Yes. right? But physics was your pet subject. So was it because you were extremely good in physics that you had to spend little less time on it, or were you giving more time to physics? Like during preparation, I would give a lot of time to physics because physics is tough. During exam also, I gave most time to physics. So you had maths also. You had Yes, maths as an additional subject, yes, ma'am. and you were pretty comfortable with maths, I think. Even and you were attempting even tests of engineering, IIT levels also. Aditya, that is not everyone's cup of tea. Yes. Okay, was maths your strong point? Do you think you had an additional subject? Maths was that useful to you on the whole? Do you suggest students should take maths in their 11th and 12th along with their, or is it burdensome? Well, ma'am, I think maths was indeed very useful for me. It helped me in my calculations, as you said. And well, I won't suggest that all students should take maths. It should be like their own taste and own choice. Physics calculations become very easy, right? So when they become easy, you can do it at a faster pace and you can complete the exam in stipulated time. When I look back now, well, I think there are some topics in maths which a student can do, and that will help him in physics. I won't say that complete maths would help him, Okay. but there are some topics like I would suggest integration, differentiation, some kind of basic geometry. So that means on the whole, mathematics is useful as an additional subject. Yes, And ma'am. if you cannot handle it, Yes, you ma'am. should at least take some help and do some portions of it. Okay, one very interesting aspect of yours. You were a very respectful child, whether it is school teachers or, coaching teachers. You were grasping knowledge from everywhere, right? Often we see people being judgmental. I think as a student, being a slightly less judgmental and slightly more absorbing of the knowledge which every teacher, whether in any kind of, sort of atmosphere is giving you, helps. What do you think? Yes, ma'am. Ma'am, actually, I have been brought up in a way to respect teachers, and I think it's very important to respect somebody who's giving you education. Because NEET is an interplay of many things. It's not just you studying yourself, doing questions. It's like you get one feedback from one teacher, other feedback from other teacher, and it all makes up into a good score. So that is Yeah, important. I totally agree. This is one thing I always want should learn, because the Guru Shishya Parampara of ours is like, it should be there, Yes. isn't it? It And goes without saying that every Guru is your mentor yes. and is mentoring you in different manners. Might Yes. give you some self confidence, be helpful to you, give you some kinds of mental support in the tough time of yours. Might appreciate you so much that you're full of self esteem. Also, when you respect them, you kind of enter into their arena of positive vibrations, and that is also very important. That is so nicely put. I think all your teachers of warfare, from your nursery to your coaching to your medical college, in every aspect, will be loving to hear this from you. You could have easily cracked any competitive exam. Do Yes. you think medical stream was your calling? I had this passion and zeal in me to help people, to become a doctor one day, to be able to diagnose the ailments of people, to be able to treat them, so, and to be able to burst their myths and to be able to help the community, and that is what makes a good doctor, right? So when I was like in my initial years, so my dad used to say that tu to doctor hi banega. So the thing is कि आप बचपन से कैसे आप brought up होते हो, so that is, I think, pushed me into medicine. So how is your college? You chose MAMC and you like to call it your dream college. How is your experience and how are you feeling? Because students will be aiming towards entering MAMC, especially the Delhi students
would love to go to Maulana Azad. So what is your, how are you feeling in that college, and how is your Um, experience so far? yeah, it's been truly amazing being a part of Nancy. You get to learn from people all across the India, and you get to learn from the best faculty, postgraduate Okay. staff members. You get in a very competitive yet friendly environment that would help Mm, you to expose your potential. that's Yes. nice. So one person I feel has influenced you a lot is your father. So can you Yes. join us? Hello, Mr. Aggarwal. Especially for Aditya, I've seen that you were a great friend. I think you were the biggest, one of the biggest influences in his life, who has mentored him. And what were your ways of keeping him focused and motivated so that, parents can benefit from it? Aditya, from the beginning, he is a very naughty student. कि what happens कि मैं जॉब पे जाता तो Hmm. मेरे पेरेंट्स मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल करते कि ये तो संभल नहीं पा रहा और इसकी मम्मी से भी नहीं संभलता. पहले तो उसके लिए जो मेड्स रखी, आई चेंज Okay. 2 मेड्स कि जो Okay. उसको हैंडल कर ले, बट वो भी Uh-huh. नहीं हो पाया. तो माय पेरेंट्स सजेस्टेड कि तुम भी थोड़ा सा इस पे ध्यान दो. तो Okay. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आई स्टार्टिंग पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स हिम. Hmm. सो मैं उसको सुनता था, उससे बात करता था, उसके साथ खेलता था. मुझे भी शुरू से खेलने की बहुत आदत थी. तो मैं इसको अपने साथ ना Oh, बास्केटबॉल okay. खिलाता था. और इसको लगता था कि जो पापा Uh-huh. कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं. और एनी टाइम मैं कुछ भी Uh-huh. करता हूँ तो मतलब पापा मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं. बस वो मैंने Okay. इसका जो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, उसको मैंने पॉजिटिव Uh-huh. वे में चेंज कर दिया. So how were you managing the time, like focusing on him? हाँ मैम, बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आई यूज्ड टू कॉल हिम आफ्टर Okay. आफ्टर हिज स्कूल. सो मैं इससे Acha. फोन पे बात करता था. Mm-hmm. और मैं थोड़ा ऑफिस से भी जल्दी आता था अपने काम से. मैं Okay. सुबह जल्दी, Okay. जैसे ये स्कूल जाता था तो मैं भी उस टाइम ऑफिस जल्दी जाता था, जिससे मैं अपना जो वर्क टाइम है वो स्कूल टाइम में ही कवर अप कर. Okay. सो देन व्हाट हैपेंस कि जब ये Acha. स्कूल से आता था उसके बाद मैं आफ्टर 3-4 आवर्स स्कूल से आने के बाद इससे मिलता था. तो आई यूज्ड टू चेक हिज कॉपीज, आई यूज्ड टू आस्क हिम कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा. फिर ही यूज्ड टू टेल मी, अच्छा बच्चे गलती करते हैं, बच्चे बहुत उनकी सोच भी वैसी होती है. तो मैंने अपनी सोच को, उसकी सोच को अपनी सोच से मिला. वट एवर ही इज थिंकिंग, मैं भी शायद बचपन में ऐसे ही सोचता. So this develops a very good friendly atmosphere. मतलब शुरू से ही आप उसकी एज के अकॉर्डिंग मैच करा आपने मैच अपना करा. माइंडसेट. थोड़ा अच्छा लिटरेचर पढ़े तो जो बच्चों को वो दे सके. तो वही मैं, मतलब मुझे आदत या शुरू से एक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर तो बुक्स लेता था. आप, मतलब आप बुक्स भी इसको लाकर देते थे, एंड हाँ ही वाज रीडिंग दीस बुक्स एंड हाँ, ऑल. बुक्स. और मैं खुद भी पढ़ता था और ये भी पढ़ता था थोड़ा बहुत. मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं पढ़ता था तो मैं ही पढ़ के इसको सुना देता था एज ए स्टोरी. ओके. हम्म. सो न्यूज़पेपर पढ़ा तो कुछ बता दिया इसको, जो भी हाँ अच्छा हाँ, लगा तो इस दैट्स तरह. वेरी नाइस. हाँ, यू आर सेटिंग एन एग्जांपल. मतलब आप पढ़ोगे, नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स वो लाकर दे देते हैं कि तुम पढ़ो, बट जब बच्चा देखता है कि पेरेंट्स आर रीडिंग, देन यू लर्न सो मच फ्रॉम योर पेरेंट्स. जो स्कूलिंग का जो फॉर्मेटिव इयर्स हैं, व्हाट वाज योर फोकस ऑन, वेदर इट वाज गुड, स्कूल में जाए, या कि स्कूल ठीक हो पर टीचर्स उसमें बहुत अच्छे हों, या कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग कराओ स्कूल्स में, या फिर घर में ही ज्यादा पढ़े? जो स्कूल गोइंग बच्चे फॉर्मेटिव इयर्स में है, स्पेशली 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक, what advice do you think we should give to the parents at that level? Because मैम आई शुड से कि एवरी स्कूल इज गुड एंड ऑल टीचर्स आर गुड. ये जो पेरेंट्स के दिमाग में ये जो एक रहता है कि टीचर्स ने वो गलत कर दिया या ऐसे कर दिया, वो गलत है. तो पेरेंट्स शुड हैव पॉजिटिव थिंकिंग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे को क्या सिखा के भेज रहे हो घर से. स्कूल में द चाइल्ड स्पेंड्स वेरी लिटिल टाइम, पर बच्चा जो होता है वो घर से बहुत कुछ सीख के आता है. स्कूल में अगर वो घर से वो पॉजिटिविटी लेके आएगा और टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट और लव अफेक्शन रखेगा, तो उसको वो सब्जेक्ट ग्रास्पिंग में इजी रहेगा. एंड सेकेंडली आई शुड से कि थोड़ा सा पेरेंट्स का अटेंशन भी चाहिए. टीचर्स तो दे आर पेइंग अटेंशन,
Parents should also give attention. Yeah, because I remember you were the person who was always coming with him, and you were the person always insisting on meeting teachers and finding out about it, and like discussing with Aditya, ye book achhi rahegi, ya why don't you do that? You are like, I found that parent की जो involvement होती है वो बड़ी important होती है, and you as a parent were totally involved with the kid. So it was a very nice thing to see. And then you had a lot of emphasis on what he's eating, how much he's exercising, and you were quite rightly, आप काफी इस पे बताते भी थे कि भाई बच्चों को इस समय ये खाना चाहिए. So ये जो 2 साल होते हैं 11th और 12th के, जिसमें बच्चा बहुत स्ट्रेस में भी होता है और बड़ा कंपटीशन भी होता है, स्कूल, कोचिंग, सब चीजें हैंडल कर रहा होता है. What was your focus on diet and exercise during the, कितना टाइम मिलता है बच्चे को, कितनी एक्सरसाइज कर सकता है? What is your take on it? Yeah, ma'am, there are 3 things. Your first thing कि मैं स्कूल में आता था या कोचिंग स्कूल में, मैं I used to talk to the teachers. So जब आदित्य अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता था तो उसमें मेरा यही फोकस रहता था कि आपको क्या चीज समझ में आया, क्या चीज नहीं समझ में आया. तो जहां पर भी उसको प्रॉब्लम आती थी, मतलब आप हर सब्जेक्ट उसके साथ डिस्कस करते थे, हर सब्जेक्ट के बारे में पूछते थे उससे? हाँ, हर सब्जेक्ट्स के बारे में. आप क्लूड अप थे हर सब्जेक्ट के बारे में? हाँ, मतलब वो एक्चुअली मैं रीड करता रहता था तो मुझे थोड़ा पता चल गया. जैसे फिजिक्स आई डू नॉट नो, केमिस्ट्री. काफी पेरेंट्स कहते हैं हमें क्या पता फिजिक्स में क्या पढ़ रहा है, हमें क्या पता बायो में क्या है. बट यू वर एंश्योरिंग कि आपको थोड़ा बहुत पता था उसके बारे में, वो क्या पढ़ रहा है. मैं जब ये पढ़ता था, मैं शुरू से देखता था तो मुझे थोड़ा बहुत पता चल गया था, मतलब. और फिर फंडामेंटल्स तो एक ही होते हैं हर चीज सीखने के. तो अगर कुछ नहीं बच्चे को समझ में आ रहा तो आई यूज्ड टू गो टू द विजिट स्कूल और कोचिंग स्कूल, और वहां पर टीचर्स से मैंने बात की और वो मुझे कुछ पॉइंट्स बताते थे. तो वो पॉइंट्स में आदित्य को थोड़ा इलेबोरेट कर देता था. एज अ पेरेंट आपने एंश्योर करा है, इट्स नॉट इजी मिस्टर अग्रवाल कि आप हम हर एक सब्जेक्ट पे इतना टाइम निकालें. बच्चों, हम सोचते हैं बच्चे को हमने भेज दिया पढ़ने के लिए, हमने भेजा, हमारा काम खत्म हो गया, यू नो. बट एज अ पेरेंट अगर आपको 2 डिजिट रैंक 1 डिजिट रैंक चाहिए इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यू हैव टू वर्क विद द स्टूडेंट एज अ टीम. Did you modify your own schedules also कि भाई ये पार्टी नहीं जानी, वो नहीं करना, कि आपकी लाइफ चलती रही, यू नो, देखा बच्चे ने क्या पढ़ा, आप घर में बैठो, हम होकर आते हैं. क्योंकि कुछ सोशल एक्टिविटीज, कुछ सोशल फंक्शंस हमको जाना ही पड़ता है. हाँ, you're right. कैसे मैनेज करा? ये मैं आपको इस पे जरूर फोकस करूंगा कि सबसे पहले तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, दैट वाज ऑन डाइट एंड एक्सरसाइजेस. तो एक्सरसाइजेस तो हो जाती थी, हम लोग थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ही खेल पाते थे, क्योंकि इसको तो सुबह स्कूल गया, उसके बाद कोचिंग स्कूल गया, तो इसको टाइम ही नहीं मिलता था. फिर भी हम ना जैसे एक प्लेफुल एटमॉस्फेयर में रखता था घर पे, ये भी और मैं भी, कि चल भाई एक शॉट ही मार लेते हैं, चल एक बॉल ही फेंक देते हैं, क्योंकि घर में छोटा सा हमने एक प्ले एरिया बना रखा है. सो और डाइट पे वी यूज टू टेक वेरी लाइट डाइट. मतलब जैसे आपको घर का जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खाने हैं, पल्सेस हैं, दाल है, रोटी है, सब्जी है, वो खाओ. और वंस ए वीक हम लोग आउटिंग के लिए जाएंगे कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में, और जो तुम्हें पसंद हो वो खा लेंगे. तो वहाँ आउटिंग हुई. आपने का जो क्वेश्चन है कि मैंने अपने प्रोग्राम्स कर्टेल किए, या यू आर वेरी ट्रू. ऑफिस के बाद मेरा कोई फ्रेंड सर्कल मैंने नहीं उस समय मेंटेन किया. Oh my God. बस मैंने I don't think सभी ऐसे कर सकते होंगे, but anyway, that's a big sacrifice. Yeah, no parties, and even I avoid sitting in जो एक फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, मैं उसमें बैठता ही नहीं था. या तो इसकी मम्मी जाती थी मेरे पेरेंट्स के साथ मैरिज में, या फिर मैं अकेला जाता था, इसकी मम्मी को इसके साथ रखता था. मतलब बच्चे को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये तो अटेंड कर रहे हैं और मैं किसी तरह से, यू नो, इट्स लाइक अ पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. नहीं, पेनफुल नहीं. और हम लोग आउटिंग्स रखते थे, मैं, आदित्य और इसकी मम्मी, हम लोग तीनों घूमने जाते थे. और एक्चुअली वी आर वेरी फूडी पीपल, तो हम लोग रेस्टोरेंट्स में, दिल्ली के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं, उसमें एटलीस्ट वी हैव ए लंच एंड डिनर, सो जिससे हमारा थोड़ा लाइफ एंजॉयबल हो जाए. और बाकी मतलब एक तरह से आप तीनों ने ही टेस्ट दिया है, मतलब तीनों का ही एग्जाम था,
और अपने अपने तरीके से दे रहे थे आप, है आपने ना? अपने और आपने तो काफी फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री पढ़ी ली है. एंड आई होप यू नो कि अब नीट में वो एज लिमिट नहीं है, so and so that means a lot goes into it. Social media has to be curtailed, हाँ. and TV was working कि टीवी भी बंद करा हुआ था हाँ, आपने. मुझे टेलीविजन का शुरू से क्रेज नहीं था. मुझे खेलने का बहुत शौक है, खेलने का, घूमने का बहुत शौक है. ऐसे होता है ना कि हम टीवी देख रहे हैं, आप वहां जाके पढ़ लो. नहीं, ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं ओके. था कि टेलीविजन तो मैं मतलब इसी के साथ देखता था. जब भी इफ ही इज वाचिंग तो हमारा फैमिली चलता था. सब लोग, मम्मी पापा या मतलब इसकी मम्मी, मैं और ये भी देखते थे. तो मतलब जैसे कोई शो आया, डांस शो या म्यूजिक शो, तो हम लोगों ने देखा, एंजॉय किया. फिर इट वाज ओनली फॉर जस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर, और Okay. फिर So in हम a लोग, day it was hardly for half an hour or हाँ, so. हाफ एन आवर, उतना टाइम नहीं लगता था. न्यूज़पेपर, न्यूज़ जो होती थी वो मैं न्यूज़पेपर से कवर अप कर लेता था. ऐसे गोल को देने के लिए a lot goes into it as a family, I think. जी 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 जी. Hmm. So Aditya, do you think medical is a good profession? You know, and I how think, many students should come forward for it? well, ma'am, I think medicine is actually the best profession because you keep Okay. earning till you die. And it gives me a feel of kind of satisfaction. डॉक्टर बन के अब लोगों की हेल्प करना है. But isn't it a long process? Like, you know, you do your MBBS and you do your MD. Like some students tell me इसमें बहुत पढ़ाई है. You know? Yes, ma'am. But there are students who tell me when I go into the OT, I breathe. This is my space. This is what I was born to do. So, do you think वो passion, वो जुनून होना चाहिए तभी इस profession में आना चाहिए कि वो develop भी हो जाता है once you enter it? Well, ma'am, I think वो develop हो जाता है because when you are at 18, you don't know much about things. You're not exposed to the world. But Yeah. many a times it gets developed as you sail across your MBBS years, then you do your MD, then residency, then you Yeah, become an attending absolutely. physician. So it comes as, the process really goes. So it was such a lovely talk. You are the father-son duo, you know, the total team who works together. So all the best. Thank you, ma'am. Ma'am, actually, my father has to say something. Yes, sure. Through this media, I want to congratulate and wants to pay heartiest thanks to all of the teachers and Oh, all of how you. sweet. And God Yeah. bless you all. That's very nice of you, Mr. Aggarwal. Thank you so much for joining us. Yeah, thank you.